वेलकम एवरीवन। हम थोड़ी देर में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ी देर वेट करें। Hello guys, this is me Neha Kumari, your today's host. I am third year student of Kaidevam University doing my bachelor's in information technology. Today is our sixth event of the series Tech Weekend with MTH. Our today topic is Introductions to Explainable AI and our speaker is Mr. Jawad Amin. Mr. Jawad is the Beta MLSA and lead of the Microsoft Learn Student Ambassador Club, IMSA Sciences. He is also a web developer at Ray Media Group. He is a perfect choice for today's session because of this extensive knowledge in the field of AI. Welcome, Mr. Jawad. You can continue. Thank you, Neha. Thank you so much for your introduction. Hello, everyone, and good evening. I am Jawad Amin. And before I say anything, even before I introduce myself, I just want to say that when I'm going to attend a session as an attendee, so I must know who is the speaker. स्पीकर ऑडियंस के लिए स्पीकर का जानना बहुत ज़रूरी होता है
और मेरे लिए इसकी वजह ये है कि आई एम माई सेल्फ माइंडफुल ऑफ माई टाइम, कि मैं कहाँ पर अपना टाइम दे रहा हूँ, और आई सजेस्ट दिस टू एवरी वन. So, in that regard, I will give a short intro. I am Jawad Amin, a final year student, CS undergrad, and I am community lead of MLSA IM Sciences, and also a beta Microsoft Learn Student Ambassador, and basically an educator. Uh, and to sum up my persona to you all in one short statement, I usually say that I am an ordinary being, always endeavoring to achieve the extraordinary. तो ये नहीं है कि मतलब I'm better than you all. We all are students, right? But the thing is that my interest is taking me over here as a speaker. And if I am asking you for your attention, so I'm sure that I will be presenting you with something which you won't be saying कि क्वालिटी नहीं थी या आपने कुछ सीखा नहीं. तो आज का सेशन बोरिंग नहीं है. इट इज़ शॉर्ट कंपैरेटिवली. ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका. एंड आई एम हेयर विद टू डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव्स जो कि मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. वन इज़ के व्हाट इज़ एक्सप्लेनेबल एआई. ठीक है, एक्सप्लेनेबल एआई क्या है एंड व्हाई शुड एक्सप्लेनेबल एआई एग्जिस्ट. बस ये दो मैंने स्टार्ट में आपको वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दिया. एंड टुवर्ड्स द एंड आप खुद पे डिसाइड करें कि विद इन दैट शॉर्ट कंटेंट दैट आई विल बी प्रेजेंटिंग इन अ वाइल, did I make justice to my claim or not, right? So without any further intro or something, I will move to my slides and let me present it. Please confirm me on that my slides are visible and I am clearly audible. Anyone of the audience, not the management. Anybody can unmute and tell me that I am audible clearly and my slides are presented. Yes, sir. It's look perfect. Okay, thank you. I guess it was Neha. So this session is from, as you can see, the title Tech Weekends with MTH Series 1.6, and Mudassir is with his team is doing a great job utilizing these weekends. So I I greatly admire and appreciate this effort from his side. So to the topic, understanding explainable AI, in short, we write it as XAI, right? So I'm here with content of a renowned professor, and the professor's name is Hema Likaraju, who is an assistant professor at Harvard University, and she specializes in this explainable AI field, right? So, if I just briefly move. I have opened the our portfolio over here. You can visit here and you can further what is what the thing which you should be visiting is her research, right? You can just look at all the research she has done, and this could be a starting point. Once you are good in or in intermediate level, you can follow her. And being someone who is interested in pursuing explainable AI in my advanced studies, I do follow her, and the content is too from the same professor, right? So before I start with the actual content, this is something I wanted to share with my audience, which I came across recently. Gartner is a research and consultancy firm, US based, and this is their production with what they call as hype cycle. And they do work on emerging technologies, and then they produce such cycles. So before explaining explainable AI, I want to talk briefly for a minute on what this hype cycle is and why this is interesting. So this is 2022's hype cycle for artificial intelligence. And what they say, they are proposing that every emerging technologies passes through some fixed phases, some fixed five
phases, we can say. So what they are calling it, that over time you can see the graph. On the y-axis we have expectations, and on the x-axis we have time, right? So what they are actually educating us in this particular graph is that every emerging technology, but this graph is specifically for artificial intelligence. They say that this would be all technologies or advancements being made or will be made in AI will have to or will pass through these five phases they call: innovation trigger, peak of inflated expectation, trough of disillusionment, slope of enlightenment, and plateau of productivity. Briefly explaining कि जब हमारे पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो वो उसका जो मैस रिएक्शन होता है, वो क्या होता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा या तो एक्साइटेड हो जाते हैं, या इन टर्म्स ऑफ एआई a certain fraternity डर जाती है, they are scared and they find it as a threat to the humanity and all that. तो वो किस चीज़ का नतीजा होता है, वो आप देख सकते हैं, वो ये पीक ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है? वी आर इन द era ऑफ नैरो एआई, ठीक है? वी आर नॉट yet there, which they call AGI, artificial general intelligence. तो नैरो एआई में इन्होंने ये सब फील्ड्स, आप अगर इनको, इफ इट इज रीडेबल, और यू मे देन सर्च फॉर इट एंड यू वुड फाइंड अ गुड क्वालिटी वन, कि यहाँ पर हमारे पास इन्होंने डिफरेंट एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या जो आ चुकी है वो सब मेंशन की है। और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि अब यहाँ पर इसको समझे कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आती है, उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, वो सारे टेक्नोलॉजीज इस फेज तक आ जाती है जो कि पीक ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस होती है, somehow unrealistic expectations होती है, या हम उसको exaggerate कर लेते हैं with our actions, with our perspectives. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ा टाइम गुजरता है, तो when then we see कि ट्रफ ऑफ डिसल्यूशनमेंट स्टार्ट हो जाता है, कि हमें लगता है कि यार जितना हम इसको समझते थे उतना ये इसने कोई डिसरप्शन अकर नहीं की है। तो फिर क्या होता है, हम यहाँ पर ये जो हमारे पास ये ट्रफ ऑफ डिसोल्यूशनमेंट है, हम यहाँ पर स्टैंड होते हैं फिर। और फिर ये वो एरिया होती है कि अगर पीपल कीप रिसर्चिंग और डेवलपिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है कि हम प्रोग्रेस करते हैं, प्लेटू स्लोप ऑफ एनलाइटमेंट आती है, और उससे हम प्रोग्रेस करते हैं प्लेटू ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब ये प्लेटू ऑफ प्रोडक्टिविटी आती है, दिस इज द टाइम कि जहाँ पर हमारे पास एक ख़ास टेक्नोलॉजी की सही और गलत यूज़ का भी तयन हो चुका होता है, और हमें ये पता चल जाता है कि ये इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का प्राइम यूज़ क्या है, ये किस लिए यूज़ होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कलर्स गिवन है और शेप्स हैं। जो वाइट है इसके साथ लिखा है less than 2 years। जो ये स्काई ब्लू है, इसमें इस पर लिखा है 2 to 5 years। फिर ये डार्क ब्लू है 5 to 10 years। फिर ये जो रेक्टेंगल शेप में है more than 10 years। फिर ये जो क्रॉस और सर्कल शेप बना है obsolete before प्लेटू, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि प्लेटू और प्रोडक्टिविटी को प्रोग्रेस करने से पहले पहले obsolete भी हो जाते हैं, आ जाते हैं। इन सब फेजेस में से किसी भी एक फेज पर ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बात ही इसकी ख़त्म हो जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो फिजिक्स इन्फॉर्म्ड एआई, कॉजल एआई, डेटा सेंट्रिक एआई, एआई इंजीनियरिंग, डिसीजन इंटेलिजेंस, कंपोजिट एआई, और बहुत सारे एआई की फील्ड्स गिवन है जो कि गार्टनर ने स्पेसिफाई किए हैं कि दे आर ओवर द प्रोग्रेस, कि ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड दे वुड बी प्रोग्रेसिंग प्लेटू ऑफ प्रोडक्टिविटी। और उन्होंने अपने गेस भी लगाए हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट लुक एट दिस कंपोजिट एआई, तो इसके साथ क्या लिखा है, स्काई ब्लू कलर में सर्कल है, तो इसके साथ ये 2 to 5 years। ये 2 to 5 years का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर टेक्नोलॉजी है कंपोजिट एआई, ये 2 to 5 years लेगी, ये इनकी प्रिडिक्शन है यहाँ तक आने के लिए, प्लेटू और प्रोडक्टिविटी को अटेन करने के लिए ये इतना टाइम लेगी। जो हमारा इसका हमारे एक्सप्लेनेबल एआई के साथ क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल एआई के नाम से एक हमारे पास यहाँ पर मेंशन है जो कि डार्क ब्लू है 5 to 10 years। ये अभी
This is in discussions. It's a hot research area, बहुत रिसर्च हो रही है and people are pursuing it. और अभी ये peak of inflated expectation को approach कर रहा है, and it will take next 5 to 10 years to reach here plateau of productivity. Responsible AI के अंदर responsible AI is concerned with human centric AI, और human centric AI में human is the priority, कि आप उसको कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। वो एथिक्स भी आ जाती है, सेफ्टी, प्राइवेसी और एक्सप्लेनेबिलिटी की जो अब हम आज बात करेंगे, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल एआई में आ जाते हैं, उसके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज़ रिलेटेड टू अवर टॉपिक, एंड जनरली मैंने एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। जो भी एआई में इंटरेस्टेड है, दे शुड सी दिस चार्ट, उनको ये ग्राफ जो है वो देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसका प्रिंट आउट निकाल लें। आई वुड से इतना मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा है ये ग्राफ, कि आपको, अगर आपको सब इसका नॉलेज हो, अभी इसमें कितने ओवर 20 टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब का आपके पास नॉलेज हो, एंड यू आर समवन हु वांट टू परस्यू हिज और हर करियर इन एआई, आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है कि आपको कहाँ पर अब जाना चाहिए। ठीक है, आप आपकी सोच जो है वो वसी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस हाइप साइकिल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022। नाउ अब हम आते हैं एक्सप्लेनेबिलिटी पे। एक्सप्लेनेबिलिटी, व्हेन यू विल बी सर्चिंग, अगर आपको पहले से आइडिया है तो वेल एंड गुड, अगर इसके बाद आपका इसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है और आप इसको सर्च करते हैं, तो यू वुड बी हेयरिंग टू वर्ड्स, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इसमें स्लाइट डिफरेंस है। इंटरप्रिटेबिलिटी, हम पहले, मैं इंटरप्रिटेबिलिटी पर थोड़ा बोलता हूँ। इंटरप्रिटेबिलिटी क्या होती है, कि जब जो मॉडलर होता है, जो इंजीनियर होता है, जो स्टूडेंट होता है मशीन लर्निंग का, वो कोई मॉडल बनाता है और वो उसको ऐसे ट्वीक कर रहा होता है कि उसको पता चल रहा है कि बाय ट्वीकिंग दिस पर्टिकुलर पैरामीटर मेरे एक्यूरेसी पर ये फर्क पड़ रहा है। कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब हम, मेरे पास एक मॉडल ये रिजल्ट दे रहा है, तो मुझे सिर्फ ये पता चल जाए इंटरप्रेटेबिलिटी में कि ये किस पैरामीटर की वजह से ये चेंज, मुझे ये इफेक्ट किस कॉज की वजह से अकर हो रहा है। तो इसको हम इंटरप्रेटेबिलिटी कहते हैं। एक्सप्लेनेबिलिटी फिर इससे ऊपर है, कि एक्सप्लेनेबिलिटी में वी कंसर्न स्टेक होल्डर्स। हम कहते हैं कि ये कॉस्ट तो आ रहा है, वाई कॉस्ट क्यों आ रहा है, हम उसमें जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर फिर हम एक्सप्लेनेबिलिटी की बात करते हैं। दिस इज ब्रीफ पिक जो कि डिपिक्ट कर रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इमेज रिकग्निशन सिस्टम है और वो केट को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो अगर तो एक्सप्लेनेबल सिस्टम ना हो, तो दे वुड से द सिस्टम वुड प्रिडिक्ट कि दिस इज अ केट, दैट्स इट, ये हमारे पास मॉडल हो गया। ठीक है, अब on the other hand, XAI explanation क्या होगी, कि this is a cat, it has fur, whiskers and claws, it has this feature, this is why it is a cat। तो आपको एक explanation भी मिल रही है। अब question would be in mind कि explanation की हमें ज़रूरत ही क्या है। अगर हमें accurate decisions मिल रहे हैं, हमें accurately पता चल रहा है, तो फिर हमें explanation की क्या ज़रूरत है। This is the motive or part of the objectives, कि आपको पता चल जाए कि why should explainable AI exist, जो कि सेकंड ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का। तो मोटिवेशन क्या है, when we look around, and being someone in this, most of you would be from the computer science background, software engineering, data science and all, right? So we all know that whether it is healthcare, judiciary, banking, social media, uh, or e-commerce and all, machine learning is everywhere, right? This is something we all would agree on. अब मशीन लर्निंग हर जगह यूज हो रही है, तो क्वेश्चन इज मॉडल अंडरस्टैंडिंग नीडेड एवरीवेयर। हमें मॉडल अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए, हमें मॉडल को समझने की ज़रूरत ही क्या है। अगर हमारे पास वो मॉडल काम कर रहा है, लेट that model work. Why do we bother about understanding that particular model? And answer to that is कि not all applications require model understanding। हमें हर चीज़ के लिए model understanding नहीं चाहिए। For example, you are using Facebook and you being suggested or recommended a friend, जो कि आपका किसी भी वहम गुमान में आपके कनेक्शन में बिल्कुल अनयूजुअल रिकमेंडेशन आपको आ गई है।
तो does that make any difference, a big difference to your life? नहीं, आप एक्सेप्ट ना करें। तो अब यहाँ पर भी, अब क्या हमें मॉडल अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पे? नहीं। वाई शुड आई बी लुकिंग इनटू व्हाट्स हैपनिंग अंडरनीथ? ठीक है, अंडरहुड क्या हो रहा है यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है। नो ह्यूमन इंटरवेंशन। अब मॉडल अंडरस्टैंडिंग नॉट नीडेड बिकॉज लिटिल टू नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इनकरेक्ट प्रिडिक्शन। अगर इनकरेक्ट प्रिडिक्शन हो भी रहा है तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस इतने नहीं है कि हम वी शुड बी कंसर्न्ड के वी शुड गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडल। प्रॉब्लम इज वेल स्टडीड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड एक सिनेरियो होती है ये, कि बहुत डेटा पर ये चीज़ें ट्रेंड होती है। तो इसमें दीज आर एक्सटेंसिवली वैलिडेटेड सिनेरियोज। ठीक है, तो मॉडल प्रिडिक्शन पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो इन सच सीन्स लाइक दिस इज जस्ट टू टेल यू कि हर जगह पर हमें एक्सप्लेनेबिलिटी चाहिए भी नहीं, लेकिन देयर आर एरियाज जहां पर हम एक्सप्लेनेबिलिटी ना हो तो दैट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, या दैट कुड बी हार्म टू समवंस लाइफ इवन। तो वो क्यों हमें मॉडल अंडरस्टैंडिंग चाहिए? व्हेन द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, जब हमारा वास्ता हाई स्टेक्स सेटिंग से हो। हाई स्टेक्स सेटिंग्स क्या होती है? हेल्थ केयर, जुडिशरी, बैंकिंग। इसका ताल्लुक किससे है? ह्यूमन लाइफ से है, ह्यूमन लाइवलीहुड से जो है कनेक्टेड है। अगर हेल्थ केयर में कोई मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय है और हमें उसका नहीं पता कि वो किस बेस पर डिसीजंस कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेबिलिटी जो है वो ब्लर है, तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वो प्रॉब्लम्स किसको अफेक्ट करेंगे? वो प्रॉब्लम अफेक्ट करेंगे ह्यूमन लाइफ्स को। सो दिस इज व्हाई वी से कि although कि modern understanding is not necessary everywhere, still we will have to have this realization कि modern understanding is needed where high stake settings are concerned. ठीक है, तो that these are few examples out of that high stake settings. अब when and why model understanding, high stake decision making settings, जिस तरह हमने कहा, क्यों इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइव्स, हेल्थ, फाइनेंसेस, ये सब इससे इम्पैक्ट होते हैं। सेटिंग्स रिलेटिवली लेस वेल स्टडीड, मॉडल नॉट एक्सटेंसिवली वैलिडेटेड। जहाँ पर हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हाई स्टेक्स सेटिंग्स नहीं है, तो वहाँ पर वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा स्टडी हो चुका होता है। तो उसमें एरर के चांसेस कंपैरेटिवली टू सच सेटिंग्स कम होते हैं। अब इसमें एरर के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? उसकी भी वजह है। हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी अलोन इज नो लॉन्गर इनफ। क्यों? एक्यूरेसी हमारे पास क्या है? हम जब मशीन लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं, टेस्ट डेटा को टेस्ट एंड ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट करते हैं। तो अब वो डेटा तो सैंपल है आउट ऑफ द population। ठीक है, तो what if ट्रेंड टेस्ट डेटा में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा इनकाउंटर इन प्रैक्टिस? आप जब उस मार्केट में डिप्लॉय करते हैं या रियल वर्ल्ड में जब वो डिप्लॉय होता है और उसको जो वो जो डेटा इनकाउंटर करता है, व्हाट इफ दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द वन इट इज बिंग ट्रेंड अपॉन? तो फिर क्या होगा? एक्यूरेसी, इसलिए एक्यूरेसी का जो फिगर है वो तो हमारे पास वो जो सैंपल है उसके बेस पे हमने किया होता है ना, कि दिस इज गिविंग मी 98% ऑफ 98% एक्यूरेसी, 96 80% एक्यूरेसी। तो वो तो उस पर्टिकुलर सैंपल को हम रेफर कर रहे होते हैं कि ये सैंपल मैंने इस सैंपल में मैंने ये डेटा जो है वो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट में जो है स्प्लिट किया, टेस्टिंग पे मुझे ये एक्यूरेसी दे रहा है। तो वो जो टेस्टिंग होती है वो तो एक सिंपल हमारे पास जो है वो बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा सैंपल होता है। तो ऑक्सिलरी क्राइटेरिया और आल्सो क्रिटिकल, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर एरर के चांसेस क्यों ज़्यादा है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू एक्सप्लेनेशन, सेफ्टी, एक्सप्लेनेबिलिटी के सब ये फिर सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि एक्सप्लेनेबिलिटी जो हाई स्टेक्स हेल्थ केयर की मैंने बात की, जुडिशरी, बैंकिंग, इन सब में हमारे पास हाउ वुड यू मेक श्योर कि जो आपका मॉडल है वो डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं कर रहा है पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट या पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट? या डू यू हैव द राइट टू आस्क एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मॉडल के दिस इज योर रिजल्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस रिजल्ट? ठीक है, वो राइट है टू द यूजर्स जो कि वो मॉडल यूज करेंगे। सेफ्टी, इज द मॉडल सेफ टू यूज? तो वो इन दोनों ऊपर से ही कंसर्न्ड है। अच्छा, अब चैट जीपीटी, चैट जीपीटी इज गिविंग यू
is giving just producing you promising results, लेकिन do you understand क्या आप क्या कोई explainability का mechanism है वहाँ पे? How do we know? जो highly technical people would go into the architecture, लेकिन जो आर्किटेक्चर जीपीटी 3.5 या जो भी है, अब उसकी फिर अपनी एक्सप्लेनेबिलिटी के का डिबेट होगा ना, डिस्कशन होगी कि हाउ वेल एक्सप्लेनेबल दैट थिंग इज और नॉट, ठीक है, अगर सर या सिरे से ही नहीं है। तो अब अगर एक चैट जीपीटी या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, तो ये वो इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस वाले फेज में है अभी, ठीक है। जनरेटिव एआई जो है वो इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन में है। हम कह रहे हैं कि बस दिस इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड और दिस इज गोइंग टू डू दिस एंड दैट, लेकिन हमें we would realize with time that this will then approach the trough of disillusionment, और वहाँ से फिर हम कहीं इसके अच्छे सही यूज़ पर आएंगे, जिसमें फिर एक्सप्लेनेशन भी इन्वॉल्व होगी, जिसमें सेफ्टी, प्राइवेसी और ये सब रेगुलेशन वाली बातें जो है इसमें फिर आ जाएगी। अच्छा, now why and when and why modern understanding का continue है, auxiliary criteria are often hard to quantify। हम कैसे quantify करेंगे in numbers और फॉर्मुलेट के नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, और हो रही है तो इतना हो रही है, इतने नहीं हो रही है, राइट टू एक्सप्लेनेशन, सेफ्टी, दीज आर ऑक्सिलरी क्राइटेरिया, ठीक है। इसको हम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी प्रॉब्लम होता है इस तरह की हाई स्टेक सेटिंग में जब आप मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो फिर ये चीज़ इंश्योर करने के लिए जो मैंने अभी बात की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। तो इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इनम्यूरेट ऑल सिनेरियोज वायलेटिंग सेफ्टी ऑफ एन ऑटोनोमस कार। दिस इज एन एग्जांपल कि आप कार में तो सब जो ऑटोनोमस कार्स में जो भी रिसर्च हो रही है, जितना भी हो चुका है अभी तक, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि the scenario the car, the autonomous car is going to encounter would be one that it is being trained upon, कि वो उसके उसके अगेंस्ट उसका मैकेनिज्म भी डेवलप हो चुका है। क्या पता कोई नई सिनेरियो उसके सामने आए, तो हाउ वुड द ऑटोनमस कार रिएक्ट देन? तो सेफ्टी कंसर्न्स आ गए हैं, क्योंकि ये सेफ्टी ऑक्सिलरी क्राइटेरिया है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इनकम्प्लीटनेस इन प्रॉब्लम फॉर्मुलाइजेशन, अब जब हमारे पास ऑक्सिलरी क्राइटेरिया इज हार्ड टू क्वांटिफाई, तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास इनकम्प्लीट हो गया। यहाँ पर हिंडर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड इवेल्युएशन, हम उसको फिर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, अगर करते भी है तो हाउ वुड यू नो कि this is the optimization we needed? How would you ensure that this is the optimization you require? Incompleteness is not equal to uncertainty। uncertainty को हम quantify कर सकते हैं कि कितना uncertain है एक system, लेकिन incompleteness is bigger a problem, ठीक है। फिर हमारे पास model understanding becomes critical when models not extensively validated। summary है in applications, trend test data not representative of real time data। तो ये कब होता है? ये high stakes, जो मैंने 3 एग्जांपल्स दी, जुडिशरी, बैंकिंग और हेल्थ केयर, उसकी एग्जांपल है कि जब ये केस हो। की क्राइटेरिया आर हार्ड टू क्वांटिफाई, ऑक्सिलरी क्राइटेरिया की जो हमने एग्जांपल बताई, बातें की, एंड वी नीड टू रिलाई ऑन, यू विल नो इट व्हेन यू सी इट अप्रोच। जब होगा तब पता चलेगा, तो अब जब होगा तो आप उसके अगेंस्ट उसको ट्वीक कर भी ले, तो फिर जब नया होगा तो उसका क्या, तो फिर उसके बाद जो होगा उसका क्या। सो दिस इज व्हाई इट इज, जैसे कि इट इज हार्ड टू क्वांटिफाई। अच्छा, फ्यू एग्जांपल्स जिससे आपको एक पता चलेगी और भी सॉलिडिफाई आपका कॉन्सेप्ट होगा कि वेयर डज मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी हैव एन इनपुट, एक प्रिडिक्टिव मॉडल है जो कि प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट इज इन द पिक्चर, या इनपुट उसको क्या मिल रही है। प्रिडिक्शन इज साइबेरियन हस्की। नाउ दिस इज द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग प्रोसेस। Now, when we incorporate explainability or interpretability into it, so what would we do? Model understanding से हमें पता चलता है कि this model is relying on incorrect features to make this prediction. Let me fix the model. जब हम इसको वो understand करने की कोशिश करते हैं, and when we dig deeper, we get to know कि ये तो incorrect features पे हमारे पास predict कर रहा है। Siberian Husky का prediction वो snow पे कर रहा है, तो this is wrong, right? This is incorrect. So what is model understanding doing it over here? मॉडल अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटेट्स डिबगिंग, यहाँ पर हमें डिबगिंग में हेल्प कर रही है। फिर हम आते हैं एक अनदर एग्जांपल में, डिफरेंट डिटेल्स। हमारे पास एक जुडिशरी या आप कह लें कि कोर्ट का सिनेरियो है कि प्रिडिक्टिव मॉडल से एक फाइल आता है, पर्सन की प्रिडिक्शन होती है कि इट इज रिस्की टू रिलीज,
आपकी मशीन लर्निंग मॉडल आपको बताती है कि द पर्सन शुडंट बी रिलीज्ड. नाउ व्हेन वी गो इनटू द मॉडल अंडरस्टैंडिंग वी गेट टू नो कि मॉडल जो है उसमें तीन पैरामीटर्स, और वो तीन पैरामीटर्स क्या है? रेस, क्राइम्स एंड जेंडर. क्राइम्स पे वो सबसे कम डिसीजन ले रहा है, जेंडर पे ज्यादा और रेस पे सबसे ज्यादा डिसीजन ले रहा है. मतलब उसने क्राइम किया भी नहीं, वो उसका एक पर्टिकुलर रेस या जेंडर हो तो वो उसके अगेंस्ट यूज हो रहा है मॉडल. तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. तो दिस इज व्हाई मॉडल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. दिस प्रेडिक्शन इज बाइस्ड. रेस एंड जेंडर आर बीइंग यूज्ड टू मेक द प्रेडिक्शन. हमारे पास रेस एंड जेंडर को यूज किया जा रहा है मॉडल अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो व्हाट द मॉडल अंडरस्टैंडिंग इज डूइंग, मॉडल अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटेट्स बाइस डिटेक्शन. यहाँ पर हमने बाइस को डिटेक्ट किया यूजिंग मॉडल अंडरस्टैंडिंग. फिर हमारे पास बैंकिंग में अगर कोई एप्लीकेंट लोन के लिए अप्लाई करता है और प्रेडिक्टिव मॉडल उसको कहता है कि डिनाइड लोन, how would the person know कि why the loan is being denied? मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, why it is being denied, क्यों डिनाई हुआ? तो जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सजेस्टिव वो आ जाता है कि इंक्रीज सैलरी बाय दिस, पे क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम फॉर नेक्स्ट 3 months टू गेट अ लोन. जब आप ये करोगे तो आपको फिर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल डेफिनेटली गेट द लोन. तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि you are rejected or your application is rejected, आपको suggestion भी recommendation मिल रही है. तो I have some means for recourse, let me go and work on my promotion and pay my bills on time. तो यहाँ पर model understanding help provide recourse to individual who are adversely affected by model predictions. तो in this case this is what model understanding is helping us with. तो last example why model understanding, कि पेशेंट का डेटा है, प्रेडिक्टिव मॉडल से वो गुजरता है, प्रेडिक्शन होती है कि पर्सन 25 की जो आईडी है वो हेल्दी है, 32 या एज है शायद 32 वाला मेल जो है वो सिक है, मेल सिक है, एंड ऑल दैट प्रिडिक्शन हो रही है एक लिस्ट ऑफ पेशेंट्स की. ठीक है, पेशेंट्स डेटा पे जब हम मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं वी गेट टू नो कि इफ जेंडर इज फीमेल एंड इफ आईडी नंबर इज greater than 200 then sick, and if gender is male, if cold is true and cough is true then sick. मेल के लिए कैसे हो रहा है और आप देखें फीमेल के लिए वो किस बेस पे वो डिसाइड कर रहे हैं. तो दिस मॉडल इज यूजिंग इररेलेवेंट फीचर. इररेलेवेंट आईडी का क्या ताल्लुक है बीइंग सिक्स से? ठीक है, तो दिस इज व्हाट द मॉडल अंडरस्टैंडिंग इज हेल्पिंग अस विद के model understanding helps assesses if and when to trust model predictions when making decisions. हमने कब ट्रस्ट करना है मॉडल पे. ठीक है, तो these were examples. Summary again would be कि debugging में हमें यूज होता है bias detection, recourse, if and when to trust model prediction, wet models to assess suitability for deployment. wet models to assess suitability for deployment, कि आप deployment से पहले ही उसको इतना एक्सटेंसिवली स्टडी कर लेते हैं कि उसके जितने भी फिर कॉन्सिक्वेंसेस हाई स्टेक सेटिंग में होते हैं आप उसको फिर अवॉइड कर सकते हैं. स्टेक होल्डर्स के क्या है? एंड यूजर्स जो यूज करते हैं उसको, डिसीजन मेकर्स, डॉक्टर्स, जजेस, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये यहाँ पर यूएस की एग्जांपल है कि उनको भी ये हेल्प करती है, रिसर्च एंड इंजीनियर्स. तो ये सब इसके बेनिफिशियरी होते हैं फिर जब हम एक्सप्लेनेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं इन आवर मशीन लर्निंग जर्नी और एआई. अच्छा, अब अचीविंग मॉडल अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि या तो टास्क वन, टेक वन या अप्रोच वन ये है कि बिल्ड इनहेरेंटली इंटरप्रेटेबल प्रेडिक्टिव मॉडल्स. व्हाट डू वी मीन बाय इनहेरेंटली इंटरप्रेटेबल प्रेडिक्टिव मॉडल? बाय इनहेरेंटली इंटरप्रेटेबल प्रेडिक्टिव मॉडल वी मीन कि ऐसे मॉडल के जो कि पहले से ही इंटरप्रेटेबल हो, वो हमें पता चल रहा होता है कि वो डिसीजन कैसे हो रहा है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती एक्स्ट्रा वर्कआउट करने के लिए टू फाइंड आउट टू अंडरस्टैंड द मॉडल बेटर. ठीक है, तो ये तो टेक वन है. फिर इसकी एग्जांपल क्या है कि जो लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन के जो मॉडल्स है, सिंपल या डिसीजन ट्री हो गया या इफ एल्स सिंपल हो गया, तो ये क्या है? इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज हमारे पास अगर हो रही है, कोई पर्टिकुलर आउटपुट एक मॉडल हमें दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है, व्हाई, कॉज एंड इफेक्ट को हम मैच कर सकते हैं कि व्हेन वी डू दिस दिस हैपेंस. ठीक है, सो ये इनहेरेंटली इंटरप्रेटेबल प्रेडिक्टिव मॉडल्स है. लेकिन व्हेन वी मूव अहेड और जब हम बात करते हैं प्री बिल्ट मॉडल्स, तो फिर क्या होता है जब हम डीप लर्निंग में जाते हैं, जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को कंसर्न करते हैं. ठीक है, जब हम ऐसे अल्गोरिदम्स में जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं टर्म ब्लैक बॉक्स. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हाउ डज दिस इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कौन सा वेट क्यों हो रहा है, कौन सा वेट किस तरह ऐड हो रहा है, क्यों
ऐड हो रहा है, हमें वो ओवरऑल प्रोसेस का पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्यों हो रहा है, आंसर टू द वाई हमें जो है वो नहीं मिल रहा होता है। तो जब हमारे पास जब हमारे पास ब्लैक बॉक्स अप्रोच में क्या होता है कि हम इसको फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम एक एक्सप्लेनर एल्गोरिदम लगाएंगे। दिस इज द एक्स्ट्रा वर्कआउट कि हम एक्सप्लेनर लगाते हैं और हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर मॉडल्स, ठीक है। और उस सिंपलर मॉडल्स हमारे पास क्या होता है, ऑल गुड, ओके। सो जो सिंपलर मॉडल्स होते हैं वो फिर हमारे पास क्या होते हैं, वो इंटरप्रेटेबल होते हैं। तो दिस इज हाउ वी अचीव इंटरप्रेटेबिलिटी, जहां पर हमारे पास प्री बिल्ट मॉडल्स होते हैं, ठीक है, या ब्लैक बॉक्स अप्रोच यूज हुआ होता है। और यही वो, दीज आर हाईली एक्यूरेट मॉडल्स। मतलब डिसीजन ट्री से एक डीप लर्निंग मॉडल ज्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन वो लेस एक्सप्लेनेबल होगा, उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी कम होगी। एंड दिस इज हाउ वी डिस्कस द ट्रेड ऑफ्स हेयर के इंटरप्रेटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, एंड इट गोज अप, जब आपके पास कोई मॉडल ज्यादा इंटरप्रेटेबल होगा उसकी एक्यूरेसी कम होगी, जब वो कम इंटरप्रेटेबल होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इंटरप्रेटेबिलिटी, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, वाई एक्सिस पर आप देखें लीनियर रिग्रेशन की इंटरप्रेटेबिलिटी हाई है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इन कंपैरिजन टू रैंडम फॉरेस्ट या न्यूरल नेटवर्क्स कम है। ऑन द अदर हैंड रैंडम फॉरेस्ट न्यूरल नेटवर्क्स दो के एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेसी हमें दे रहा है, लेकिन वो लेस इंटरप्रेटेबल है। और हमें न्यूरल नेटवर्क्स और रैंडम फॉरेस्ट में भी एक्सप्लेनेबिलिटी चाहिए होती है। वो क्यों चाहिए होती है, आई ऑलरेडी डिड टॉक अपॉन दैट के हमें वो हाई स्टेक्स, अब हाई स्टेक्स जो सेटिंग्स होती है उसमें तो हमें एक्यूरेसी भी चाहिए होती है, तो हम न्यूरल नेटवर्क ही यूज करेंगे। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे और एक्सप्लेनेबल ना हो तो भी इशू है, क्यों इशू है, वी डिड डिस्कस दैट। तो इन सर्टेन सेटिंग्स एक्यूरेसी इंटरप्रेटेबिलिटी ट्रेड ऑफ्स में एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट होते हैं। फिर sometimes you don't have enough data to build your model from scratch and you all have a proprietary black box. Ab give you example of my final year project. हम deep learning में एक कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उसमें हम योलो यूज कर रहे हैं, विच इज़ अ प्री बिल्ट मॉडल डीप लर्निंग का। तो अब दैट इज अ ब्लैक बॉक्स फॉर अस, वी कैन get into it, we can understand the architecture, but when it will be in execution, how would you know what it is doing and why it is doing? तो अब हमारे पास इनफ डेटा तो नहीं है, वो पहले से ट्रेन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब तो रिसेंट एग्जांपल चैट जीपीटी और विस्पर की जो एपीआईज अभी उन्होंने लॉन्च किया है ओपन एआई ने, तो अब पीपल विल बी बिल्डिंग अपॉन इट, एपीआईज पर वो एप्स बनाएंगे। तो दैट दैट एपीआईज या ये जो मॉडल है जो वो यूज करेंगे, दैट इज अ ब्लैक बॉक्स फॉर देम, वो उसके ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, वो एक्सप्लेनर वाला अप्रोच यूज करते हैं कि हम वी ब्रेक 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 दिस थिंग डाउन इनटू स्मॉलर algorithms, स्मॉलर मॉडल्स। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, दैट इज फॉर द अदर टॉक के वो फिर आप उसको, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप इसको फर्दर फिर सर्च कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं इसको कि हम करेंगे कैसे, आपको पता चलेगा कि करते हैं कैसे करेंगे। That is your task. Now, suggestion is if you can build an interpretable model which is also adequately accurate for your settings, do it. आप एक interpretable, आपका काम linear regression से हो रहा है, तो डू इट, ठीक है। वो इंटरप्रेटेबल भी है और आपका काम भी हो रहा है, एक्यूरेसी अगर आप वो आपको वो एक्सेप्टेबल है तो। अदरवाइज पोस्ट हॉक एक्सप्लेनेशंस कम टू द रेस्क्यू। जो पोस्ट हॉक एक्सप्लेनेशंस वही कि हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो this was uh, for the topic. Now there has been a renewed interest in modern understanding over the past half decade, thanks to ML models being deployed in healthcare and other high-stakes settings. जहाँ जैसे जैसे high stakes settings में ये machine learning और AI जा रही है, उतनी ही explainability का demand बढ़ेगा। हम देख रहे हैं वो गार्टनर हाइप साइकिल पर कि अभी वो inflated expectation को वो responsible AI वहाँ पर पहुंचा हुआ है। But soon this is going to approach in the next 5 to 10 years what plateau of productivity, ठीक है। इसके अलग से हमारे पास एक जॉब मार्केट वन में प्रिडिक्ट के हो सकती है। As ML models continue to get increasingly complex and they continue to find more applications, their need for more understanding is only going to raise. Need is going, right? It's rising up. Lots of interest and open problems waiting to be solved.
ओपन एरिया है. आई सेड कि इट इज अ हॉट रिसर्च एरिया मींस के people are going in contributing to the advancement of this particular field, जो कि under a very vast umbrella which is could be human centric AI, कि आपका फोकस ह्यूमन है, ठीक है, और उसके अंदर फिर ये सब आती है. अच्छा, यू कैन अप्रोच, एक अच्छी बात इसकी क्या है कि यू कैन अप्रोच द फील्ड ऑफ एक्सप्लेनेबल एआई फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. थीरी इसकी है, एल्गोरिदम्स डेवलपर्स बना सकते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, समवन इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक्चुअली मे कम टू दिस साइट इन अ सेंस कि एक्सप्लेनेबिलिटी में आपको एंड यूजर के लिए इंटरफेस चाहिए, ठीक है, आप किस तरह डिलीवर करेंगे स्टेक होल्डर्स को वो एक्सप्लेनेबल, वो एक्सप्लेनेशन आप किस तरह कन्वे करेंगे, दैट रिक्वायर्स एच सी आई इन इट. तो इट और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो बहुत आपने फिर जब एस की बात आती है तो आप साइकोलॉजी और भी फील्ड्स को फिर आप इनकॉर्पोरेट इन करेंगे. तो दिस हाउ इट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, कि जब आप इसमें रिसर्च करेंगे तो आप सिर्फ एआई पे रिसर्च नहीं करेंगे, यू विल हैव टू लुक and get test of a lot of other areas. So there is room for everyone. One may come from psychology, the other can may come from HCI, other may come from some other field. So this is how the explainable AI is heading, where the explainable AI is heading towards, right? Now, uh, I think that's all for the presentation. Um, अगर if somebody is interested, course on interpretability and explainability का link है इसमें. I may share with the management. They may provide you with if you got access to them, or you might reach out to me over my LinkedIn. I'm forgetting, I didn't include the link to that, but if you would search, you might find out easily, since I'm connected to all these MLSA chapters, so you would get in the searches. So you might reach out to me in over my LinkedIn, right, for any query or something. More tutorials on interpretability and explainability के लिए link है. Trustworthy ML initiative, आई थिंक इन्हीं प्रोफेसर का एक इनिशिएटिव है. सो लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड सेमिनार सीरीज ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू एक्सप्लेनेबिलिटी, ये जो ट्रस्टवर्दी एमएल इनिशिएटिव है इसके अंडर होता है. इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉलो हर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग, इसके रिसर्च को पढ़े. इसके स्टैनफोर्ड ऑनलाइन इज़ अ गोल्डन रिसोर्स फॉर अस, वो यूट्यूब, उस पे इसका कोर्स है इन मशीन लर्निंग इंटरप्रेटेबिलिटी पे, आप वो देख सकते हैं. इवन मैंने वो बहुत पहले देखा था, और ये जो कंटेंट है फिर उसी से मैंने इसको रिट्रीव किया था, एंड आई गॉट दिस कंटेंट. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. There could be a thing. I think I would just wind this up. I may go to a practical demo of how a neural artificial neural network would work, और किस तरह वहाँ पर वो इंटरप्रेटेबिलिटी, लेकिन वो आप खुद यूट्यूब पर आप देख ले कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन टेंसर फ्लो प्ले ग्राउंड में किस तरह आर्टिफिशियल नेटवर्क काम करता है. तो जब आप आप उसमें जाएंगे, उसको देखेंगे, तो जब वो आप रन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको हर न्यूरॉन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वेट वो बता रहा होगा, और साथ में आउटपुट भी आपको मिल रहा है. तो दैट इज अ सेंस और अ टेस्ट ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी, नॉट एक्सप्लेनेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी के मॉडलर या जो मॉडल बना रहा है उसको पता है कि ओके दिस इज द वेट incorporating or adding up to this particular result जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है आउटपुट में. So that's all from my side, and if anybody got any question, please go unmute your mic and you may ask, and we may interact for a few more minutes. G, sorry. Okay, this is her profile, Hema Likaraju. When you will search, you would directly get to this site. Okay? She is assistant professor at Harvard University. Now, other than this, if I got anything in my chat. अच्छा, 22 क्या है? I'm just picking the relevant questions. 22 का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि इस something or someone is more inclined to one thing against other, ठीक है.
ये बायस है। ठीक है कि आप एक चीज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, एक चीज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव है, बेनिफिट उसको मिल रही है, और दूसरा जो है वो अवॉइड हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन और वो बायस इस ज़मरे में आता है। So, although Muzammil is saying it's so difficult to understand, well, nothing is easy to understand and nothing is difficult to understand. All what matter is your interest. So one is interested. So you will have to pass on a frustration barrier. Of the topic, I think is there is a book, I'm forgetting the name, but उसमें एक idea था कि whatever you learn new, you encounter a frustration barrier. आप जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स होते हैं या जो भी कोई भी फील्ड हो, तो आप जब पहले उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको दिस विल बी नो फन। वो फन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वो फ्रस्ट्रेट करता है आपको, वो लर्निंग कर्व होता है उसको। एज सुन यू पास, उससे जब आप उससे आगे जाते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपको आसान ही क्यों ना लग रहा हो, आपको फ्रस्ट्रेशन बैरियर को पास करना ही होता है। तो थिंक दिस इज आंसर दैट। इफ anybody got any other question, please unmute and you may ask, interact, related to uh, explainable AI or related to any other relevant topic. Please go ahead. So we got no question, then we may wrap up the session. And I did say okay, you guys may reach out to me or my LinkedIn, and anybody got anything to discuss afterwards the session, uh, I will be happy to assist with anything. I will be happy to guide you with anything. I would be happy to being assisted by you in anything I could, since I did say in the start that we all are students and we all are learning. So that's all from my side. I think over to you, Neha. You might take over, and I'm done. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर। बहुत ही मज़ा आया आपका सेशन सुन के, और बहुत Thank सारी you. चीज़ें सीखने को मिली जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। Thank you, thank you. बस यही होता है कि you learn with such interactions. There are a lot we still don't know. We will know in this journey of our 4 years जो ये हैं और उसके बाद भी जो होगा. So thank you for having me, and this is a wrap up from my side. Thank you, Mudassir, for having me and arranging this session. And I wish you all the best in this pursuit, in this journey. You are doing amazing job. I did say in the start also. So more power to you, Thank you. and Thank you. soon we'll try to interact in some other future session. Thank you all. Thank you Awesome. so Awesome. much. Thank you for Allah joining. Hafiz. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अब हम अपना क्विज स्टार्ट करेंगे। सो मैं अभी आपको शेयर करती हूँ लिंक, सो आप सब ज्वाइन करें।
हमारे विनर्स हैं अब्रार, सुनील कुमार और धनेश कुमार। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपनी ईमेल्स जो है आप चैट बॉक्स में सेंड कर दें, तो आपको हम बाद में लिंक्डइन प्रीमियम दे देंगे। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ गाइस, हम अपना सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय।